people read the interview completely and read it in the way in which it is said. The particular reference that you're making here, we have read the interview, we have read the story by Reuters in full. And we can say this is a complete misinterpretation and unfortunate interpretation, leading to unwanted raking up of a controversy where it doesn't exist. It has led to discussions based on false interpretation. I appeal to all concerned to read the interview fully and understand the interview before getting your retorts ready, before replying, before participating. You're welcome to have the discussion on the interview. It's good that discussions happen on such interviews. But I would request everybody who wishes to have an opinion on this matter to read the interview in full and then participate, rather than hearing different interpretations which have already started floating around. As a human being, taking the example that if you sat in a car, whether you're driving the car or you're sitting behind with somebody else driving the car, Mr. Modi has explained that one would be saddened, that he would be saddened, any human being would be saddened if even a puppy comes under the wheel. Now, if this is being interpreted and unsustainably interpreted to mean, oh, a certain particular community has been spoken, being compared with a dog or anything else, is unfortunate, and I would only use the word despicable. It is absolutely despicable that an expression which is used, the one which is used here is puppy, and in the relation of a human being feeling bad at it, and taking this example, if somebody has spoken about it, to then go on a tenuous comparison and to extend it to say, oh, he has compared a certain community to dog, is absolutely despicable, I repeat. And therefore, I think it's important, and we are glad that discussions are happening on these matters. Let them happen. But please, everyone who speaks on this, I would only request them to read the interview for yourselves. Please read the interview for yourselves, understand it, and then please, very welcome, we are very eager to hear your opinion. I would repeat here that kindly do not go by interpretations which have come probably without reading, probably half-read sources which are commenting on this interview. लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त जो आज मुख्यमंत्री जिनके सामने सब कुछ हुआ, बजाय उस पर वो अफसोस जताने के, जिम्मेदारी लेने के, वो इस तरह का उदाहरण दे रहे हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि वो न सिर्फ उनके मन में कोई रिमोर्स है उस पूरी घटना के लिए, बल्कि वो एक उसको दुर्घटना मान के चल रहे हैं कि जो हुआ दुर्घटना हुआ। Again, this is another interpretation which I would completely disapprove of. If your expectation of a regret doesn't come in the way in which you want it, if you think that is not regret enough, I'm sorry, I will have to differ with you. I think this example in an interview is taken up with an understanding whether it is a small creature which gets under my, car's tire. I would really feel, unfortunate. I've read the interview. He's gone further to say, and therefore an incident of this kind, of a major kind, which has happened, will certainly be, causing me distress. That's exactly how the interview has gone. So this interpretation too, I'm sorry, is pertaining to one part of the interview. I wish you read the entire interview and make your inference after that. निर्मला जी, हिंदी में जरा बता दीजिए कि जो मोदी जी का इंटरव्यू छपा है, ये उम्मीद की जा रही थी, जो जितने कमेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी को सीधे सीधे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, तो उसकी बजाय उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पपी से कंपेयर किया। इस इंटरव्यू से
जितने भी ऑलरेडी ओपिनियन फैल जा रही है, मैं सिर्फ एक ही विषय बोलूँगी कि जिन्होंने इस इंटरव्यू कंडक्ट किया है और मोदी जी से इंटरव्यू हुआ है, इस पूरे इंटरव्यू को ध्यान से पढ़ लें। जो भी इसके ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं बिल्कुल वेलकम है, प्लीज़ चर्चा करिए, मगर इंटरव्यू आप खुद पढ़ें। जो भी इसके ऊपर कमेंट करना चाह रहे हैं या डिस्कशन में भाग लेना चाह रहे हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप खुद इंटरव्यू पढ़ लें। दूसरे और की इंटरप्रिटेशन के ऊपर आपके बयान ना देना, क्योंकि हमें लगता है कि आधा अधूरे इंटरव्यू पढ़ना या उसमें से एक पोर्शन को किसी और के द्वारा सुनना और उसके ऊपर आपकी टिप्पणी करना थोड़ा रिस्की होगी। इसीलिए प्लीज़ आप खुद इंटरव्यू पढ़ लें और जितने भी आपके राय रखना है, जो भी राय रखना चाह रहे हैं, वेलकम, प्लीज़ रखिए, इसके ऊपर चर्चा करिए, बिल्कुल करिए। मगर मैं मानती हूँ बिना इंटरव्यू पढ़ते और दूसरे की इंटरप्रिटेशन के ऊपर आप भी आपके राय रखना बिल्कुल रिस्की है, क्योंकि इस इंटरव्यू में मोदी जी इतना स्पष्ट बोल चुके हैं। मैं भी उस इंटरव्यू के पूरा पढ़ने के बाद ही आपके सामने आई हूँ। एक अगर छोटी सी प्राणी उनके अपने गाड़ी के टायर के नीचे आ जाते हैं, उसमें भी हमें दुख लगता है, जबकि मेरे स्टेट में इतने बड़ा इंसिडेंट हुआ, क्यों दुख नहीं लगेगा? ऐसे भावना रखते हुए मोदी जी का इंटरव्यू में जवाब आया है। इसको एक विषय को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल करके उनको रहम नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है क्या, या वो सीएम नहीं है क्या, ऐसे प्रश्न आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा। प्लीज मेरा विनती है, आप सबसे विनम्र विनती है, आप खुद पढ़ लो, उसके बाद आपके टिप्पणी रखो। निर्मला जी, माफी मांगने की बात दूसरी बात ये कि वो इसी इंटरव्यू में अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी बता रहे हैं। भारत एक सेक्युलर कंट्री है, ऐसी इस कंट्री में कोई अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी बोलने वाला वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? हिंदी में सामने He has said that he is born a Hindu and he is therefore a Hindu nationalist, and to that extent you may take it the way you want. And in a secular country, haven't there been other Hindus who have been prime ministers? What kind of an interpretation is this? I'm sorry, if the idea is to interpret everything that Mr. Modi says when he says in the way in which it wants to suit somebody, I'm sorry, that is no way one can do justice in any actually truth-seeking effort. उनसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं लोग, क्या वो लोग बात समझ नहीं पाएगा मोदी जी की? हाँ? लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को डायरेक्ट माफी मांगनी चाहिए, ये बात घुमा फिरा कहने। मैं I don't know how to say this. आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपके प्रश्नों को मोदी जी समझ नहीं रहे? लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 2002 की जो घटना हुई थी उनके राज्य में, उसको लेकर उनको माफी मांगनी चाहिए। उसकी बजाय वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बेकार क्योंकि पति आ गया, वो मरता है, दुख होता है। क्वेश्चन आप पढ़ लें और उसके तहत जवाब ठीक है कि नहीं आप निर्णय तब कर लें। आप जो क्वेश्चन अभी पूछना चाह रहे हैं उसके लिए वो रॉयटर्स इंटरव्यू में मोदी जी क्यों नहीं जवाब दे, उसके तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। आपके प्रश्न के जवाब मोदी जी बार बार बोल चुके हैं। अगर आप मान रहे हैं कि कुछ गलती हुआ तो सड़क में मुझे टांग लेना, यू कैन हैंग मी इन पब्लिक, इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज सेड. And if you think now, after SIT saying whatever it has said, and on a Supreme Court monitored trial which is going on, he has always said it, that if it was so severe an offence for which you wanted me to be tried in court, and now you're saying that he should ask maafi, is maafi enough? मोदी जी का कहना यही है कि अब तक अगर आप माना कि बहुत ही सीरियस घटना हुई ही और कोर्ट में इनको फांसी तक चढ़ाना चाहिए, वो खुद बोल रहे थे कि मुझे पब्लिक में चढ़ाओ फांसी। अगर वो गलत नहीं है जो साबित हुआ SIT के इसमें से, और आप अभी तक माफ़ी की बात कर रहे हैं, वो उतने सीरियस गंभीर आरोप का माफ़ी काफ़ी होगा। Different topic. UK government is politicizing terror issues. This Minority Affairs Minister K. Rahman Khan has suggested that they will have a panel to look after terror cases involving Muslims. How do you see that? Clearly, this is done with an intention of
appeasing a particular section of community. It is part of the Congress's vote bank politics. It is part of the Congress's strategy just before elections. All of us remember, and very clearly remember, how even a law minister, union law minister, when he was campaigning in his wife's constituency in Uttar Pradesh, during the Uttar Pradesh assembly, invoked reservation based on religious categories, when that goes against the spirit of the constitution. Now, again, 5 state elections are due. 2014's General Parliament election is also due. So naturally, the Congress is taking its favorite route of vote bank politics and appeasement politics. We condemn this. मैम सर हुई है ये स्पेशल कमेटी बनाने जा रही है, सरकार से बात कर रही है। आज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के दौरान ये स्पेशल कमेटी बनाने की जो बात आ रही है, वो हम मानते हैं बीजेपी की तरफ से कि ये टिपिकल कांग्रेस की कार्यशैली है। उत्तर प्रदेश असेंबली के चुनाव के समय यूनियन कानून मंत्री उनके श्रीमती जी के कैंपेन करते हुए उस समय भी मजहब के आधारित रिजर्वेशन के बारे में कैंपेन चलाया वोट के लालच में। अभी भी 5 स्टेट के चुनाव आने वाले हैं और 2014 के इलेक्शन शायद 2013 में ही करने वाले हैं यूपीए सरकार। इन सब को मन में रखते हुए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर आज बात कर रहे हैं कानून के खिलाफ। मैं ये भी बोल सकती हूँ, बात कर रहे हैं कि सिर्फ माइनॉरिटी के लोग जो भी अरेस्ट करके आज जेल में हैं उनके रिहा करने के लिए स्पेशल कमिटीज बनाएंगे। ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। और क्रिमिनल ऑफेंसेस में अगर कोई भी अरेस्ट होते हैं और या कस्टडी में ले जाते हैं, इन सब का कोर्ट के द्वारा ही रिहा हो जाएगा। इसको पॉलिसी या तो उनके सब कमिटीज के द्वारा करने के लिए अगर कोशिश कांग्रेस कर रही है, ये बिल्कुल वोट के लालच में अपीसमेंट पॉलिटिक्स करने वाले कांग्रेस की डीएनए यही करेगी हर एक साल इलेक्शन के पहले, क्योंकि वो पिछले 5 साल से मेजॉरिटी, माइनॉरिटी और कोई भी कम्युनिटी के लिए कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। अभी एक वर्ग के लिए ऐसे बयानबाजी करके उनके वोट कमाने के लिए ये ऐसे डिसीजंस आ रही है सरकार से। बीजेपी इसको कंडन करती है। Ma'am, one final question I want to ask you. You had quite a few final questions. Ma'am, talking about you have said that polls are approaching. Ma'am, today Prakash Karat in an interview said that later next week they're meeting in Jaipur to decide on a non-Congress, non-BJP federal front. Earlier, Mamata Banerjee also talked about federal front. Do you think it's gaining a momentum now? It has been gaining momentum every decade in this country, and we also know every time this whole effort falls flat on its face. Third front, federal front, or call it any other front. Today in India, people are fed up of this kind of, artificial creation of fronts. Coalition governments may come. Coalition governments can last only when there are larger parties leading them. Therefore, a third front is a non-starter, even if you call it federal front. Thank you.